Hello and welcome. Today we are going to see how to improve your score in CLAT 2025. So English is a section that is very important for CLAT. It is one of the 5 sections of CLAT. So in this video we are going to see what sort of preparation do you need for this section, what are the skills needed, what is the syllabus of this section, and how you can improve your skills to actually improve your score. And I guarantee if you watch this full video and apply the principles that I tell here, your score not only in that particular section, English section, but also other sections will improve immediately, almost immediately. Okay, so let's start. Right, first of all, what is the importance of this particular section, English section, in the CLAT exam? Understand one thing, that in the official syllabus of the CLAT, they say that English section has 20% of the weightage. It is true. Like, you just see the syllabus and they'll say, okay, out of 120 questions, around 22 to 20, 26. They're not telling how many actually they're going to ask. It is 22 to 26 questions they are going to ask from English, right? So clarity नहीं है, हो सकता है किसी साल में 25 मिले, in other years you might get 22. That is fine. But not only in that, actually the role of English is in 3 of your sections, not only in English. What happens is this: you have these 3 sections. English, right? 20% of your syllabus, 20% of your paper actually. You have legal reasoning, right? It is around 25% of your syllabus. It is equal to the current affairs and GK portion. 25%. This is one of the biggest sections. Of course, you know, if you are a serious CLAT aspirant, that in the event दो लोगों के marks बराबर हैं, let us say you have the same number of marks as the next person. If you have higher marks in legal, you will get a preference. So this is a very important section. And the third one is logical, right? This is again 20% marks. Add karo inko, how much is it? 65%. And this is what I have written here. Why? Because actually the skills needed for English are the same you need for legal and logical, with minor differences. It is the same kind of paper, same kind of section. आपको अलग से उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, उसी स्किल में आपका ये काम होगा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले just a request, please subscribe to this channel. We'll come up with such videos on different sections of CLAT, on different aspects of preparation, along with toppers interviews, etc. regularly now. Okay, having said that, now let us move on and check what is the actual syllabus given by consortium. सरकारी syllabus है क्या, बोल क्या रखा है उन्होंने CLAT में कि पूछेंगे क्या. And while reading this syllabus, do note one thing. अगर आपके पास में syllabus या CLAT consortium की website खुली हुई है, you will find many points which are similar in logical reasoning and this particular section, English, and of course in legal also. ठीक है, काफी कुछ common मिलेगा. So let us start. पहली चीज जो बोलते हैं, you have to read and comprehend main point. Important key term being read and comprehend. Okay. Why? I'll come to this in a while. You should know what are the arguments and viewpoints discussed in that particular passage. So you have a passage of around 450 words, and you should know what exactly is the main point and what are the arguments, viewpoints discussed in that particular passage. Draw inferences and conclusions. Typically, it's a logical reasoning thing. You can ask in English too. Okay? There is not much difference in the type of questions in logical and English. You should be able to summarize the passage. So main point in summarize, there is a small slight difference. What is the difference? In summary, basically you have to tell the premise of the argument, how it is derived, and what is the conclusion. Main point is only the conclusion. Okay, that's a slight difference, but there is a difference. Don't worry about it. They will not ask you what is the difference. Then compare and contrast the different arguments and viewpoints. So sometimes they ask you, I mean in logical reasoning, they extend it a bit, right? They'll ask you,
ठीक है भैया ये है, let us say the situation changes. Similarly in legal reasoning they'll say okay, now the situation has changed, how do you apply the same argument? But essentially you have to get to the uh, root of that argument, right? That is your requirement in this exam. And lastly, I'll make a group like this. This is group number 1, this is group number 2. Why am I doing that? Just let me first read the syllabus. बोला हुआ है, get the meaning of various words and phrases in the context that they are used in the passage, right? So देखो, बहुत ध्यान से देखना, this is a very different kind of skill that is required from you, from in comparison to all these skills. All these skills you can group into one part, these skills you can group into second part. Okay, so what are those skills? क्या चीज है, क्या requirement है आपसे? What are the skills required? Please note one thing, nobody is going to tell you like this, but I say this in every video. If you want to crack CLAT, be serious about your strategy. Know where you lack. And to know where you lack, you should know what exactly is required from you, right? So, first thing that is required is good reading speed. I think I told you a while ago that 450 words is the standard. अगर आप देखोगे ना कंसोर्टियम का सिलेबस तो उन्होंने बोला हुआ है 450 words you have to read in every passage. Okay, so this year CLAT 2024, what I did was I took the passage, the entire paper, put it into Word, and what I found was there were 13,000 plus words. Okay, and what is the time you have in the exam? You might say 120 minutes. I disagree. You don't have 120 minutes. Why don't you have 120 minutes? Because भैया गोले भी तो भरने, you have to actually mark them in the OMR sheet, and I'll advise you keep at least 15 minutes for that. So you exactly have 105 minutes. Okay, actually I'll say you have a maximum of 105 minutes in the exam. इतना ही है आपके पास में in which you have to read these 130, I'm sorry, 13,000 words. Round it off to 100. Basically you need to read 130 words per minute minimum. But hold on, some passages you will not understand by reading once. Some passages you have to reread, right? So this is not 130, this is going to be at least 150. Unless you are very good with comprehension, this is going to be 150 words per minute. And please note this down, अगर आपकी स्पीड 150 वर्ड्स पर मिनट नहीं है, आप पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाओगे. अटेम्प्ट करने की बात छोड़ दो, ठीक है, सोच करके अटेम्प्ट करने की बात छोड़ दो, आप पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाओगे. सो यू नीड 150 प्लस स्पीड just to read and attempt the entire paper. ये एकदम दिमाग में बिठा लो, ये तुम्हारा टारगेट है, ये रीडिंग स्पीड तुमको चाहिए, ठीक है. सेकेंड, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड समराइज द मेन पॉइंट्स. कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह से स्किल्स बढ़ेंगी, अभी थोड़ी देर में देखते हैं. थर्ड, यू नीड टू हैव अ गुड वोकैबुलरी. क्यों? अरे भाई देखा था यार अभी वो लास्ट जो पॉइंट था ना, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वोकैबुलरी, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल है. एंड फोर्थली, आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दिस, बट गुड कमांड ऑन ग्रामर, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली नॉट रिक्वायर्ड, राइट. अगर आप देखो क्लैट में लिखा हुआ नहीं है, कोई आपसे बोलने वाला नहीं कि यार ये ग्रामर कहाँ है, क्या है. Let us suppose in other exams it may be asked. Directly नहीं, indirectly पूछा जा सकता है. So it is good if you have a good command over grammar. But if you don't have, this is not a disability. लेकिन ये तीनों चीजों में से अगर कुछ भी गायब है तो भैया गड़बड़, मोए मोए हो जाएगा, ठीक है. नहीं करना है वैसा. तो करना क्या है, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है. फर्स्ट थिंग, देखो ये स्किल्स डेवलप करने की जो चीज है ना, दिस विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस विल नॉट हैपन इन वन डे, वन वीक और वन मंथ. रीडिंग स्पीड
I mean, after what I say here, perhaps you will have an increased reading speed of 10% in next 5 to 10 minutes. That is completely fine. But I'm talking about if your reading speed is 70 words per minute, 10% क्या 20% भी बढ़ा लोगे तो भी आप 90 पे ही पहुंच रहे हो, 90 पे भी नहीं पहुंच रहे, you are reaching 84. You have to actually double your reading speed if you are at 70 words per minute. ठीक है, that will happen over a course of time, 6 7 8 months it will take, practice लगेगी, and you'll have to read a lot of text to do that. तो पहली चीज रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए वो है स्टॉप वोकलाइजिंग. अब स्टॉप वोकलाइजिंग, वोकलाइजिंग मतलब बोलना, आवाज निकालना मुंह से, ठीक है. तो जो बहुत सारे लोग होते हैं बुक पढ़ रहे होते हैं और बुक पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दे स्टार्ट स्पीकिंग, जोर से नहीं भी बोलते हैं तो देयर लिप्स कंटिन्यू मूविंग व्हाइल रीडिंग. बिल्कुल नहीं करना है. अगर आप ऐसा कर रहे हो बुक्स पढ़ते हुए, अगर आपके होंठ हिल रहे हैं, just understand one thing, you can think much faster than you can speak. And if you are doing this, if you are vocalizing, what is happening, your reading speed is getting limited by the speed of your movement of lips. ठीक है, उससे तेज आप नहीं पढ़ पा रहे हो, और यही तो हमको अवॉइड करना है, यही तो नहीं करना था. ठीक है, तो वोकलाइजिंग करना एकदम छोड़ दो, होंठ हिलाना भी छोड़ दो पढ़ते हुए. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. जैसे ही ऐसा करोगे, आई कैन गारंटी वन थिंग, अगर तुम वोकलाइज कर रहे थे, एटलीस्ट 10% स्पीड तो तुम्हारी इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगी. इमीडिएटली मतलब अभी अभी इसी वक्त. दोबारा पढ़ के देखना, करने से पहले और करने के बाद, अभी आपको अपनी स्पीड में डिफरेंस दिखाई देगा. सेकेंडली, दिस इज इजी टू डू, नॉट डिफिकल्ट. use a pointing method. What is the pointing method? What is a pointer? This is a pointer. This is a pencil I'm using, right? Pencil, pen, finger, whatever you have, while you are reading, use that. Okay, so if you use your pointer, it will be much easier for you to actually read this and not get lost in the text. होता क्या है, लोग यहाँ से पढ़ रहे होते हैं, फिर अचानक वो इस लाइन पे पहुंच जाते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं, they lose track, right? It's also a loss of time. अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं करना. तो कैसे करना है भैया, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पेंसिल साथ साथ में लेके चलो या फिर उंगली साथ साथ में लेके चलो. Now I'll tell you a very good thing about this. Okay? होता क्या है, अगर आप एक्चुअली में देखोगे न्यूज़पेपर as well as your exam paper, the spread of text is not big. Like you have a paper like this, exam paper ऐसा है ना मान लो, तो ये कॉलम बना हुआ होता है. ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम पेपर यू विल हैव अ कॉलम, और ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है. लाइक एक लाइन में शायद 5 6 7 वर्ड्स होते, ज्यादा नहीं होते. तो दिस इज हाउ द टेक्स्ट इज रिटन. So you don't need to go like this, you can go like this. Okay, पॉइंटर ऐसे रख करके यूं. Again, you will see an improvement in speed almost immediately if you use this. And you haven't been using this, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी स्पीड बढ़ गई है. टाइम लगेगा ही नहीं, फटाफट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड थिंग, प्रैक्टिस वेरिड रीडिंग. डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट यू हैव टू रीड. करना पड़ेगा. ठीक है, चाहिए तो करना पड़ेगा. तो अगर आप ये करते हो, वेल एंड गुड. एंड लास्टली, ट्रैक प्रोग्रेस. वेरिड रीडिंग का मतलब, डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू लेट अस से फिक्शन ही पढ़ूंगा, नॉन फिक्शन नहीं पढ़ूंगा. तो फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, न्यूज पढ़ो, जो पढ़ने का मन है या जो आपको अवेलेबल है सब कुछ पढ़ो. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी आपके अंदर, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्स्ट आपको पढ़ने की हैबिट हो जाएगी. वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू इज रीड अ न्यूज़पेपर. But if you require reading material, books, I'll be more than happy to provide some PDFs. Okay? So आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, द लिंक इज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. वहां पे मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ. डेली आई शेयर प्रैक्टिस पैसेजेस, डेली आई शेयर वीकली आई शेयर अ मॉक, current affairs PDF, and monthly we have a free mock test.
all of that is free, right? I'm not charging you any money for that. But वहां पे आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरे को एक वो दे दो ना कुछ पढ़ने के लिए, आई डोंट नो व्हाट टू रीड, I'll send you some PDFs. Personally you ask, don't ask in the group. हो सकता है कुछ पायरेटेड हो, पता नहीं कौन मुझ पे केस कर दे, सारे तो लॉयर हो, ठीक है? Fourthly, track progress. What does it mean? सबसे पहले ये सब करने से पहले ना अपनी स्पीड मेजर कर लेना, फिर अप्लाई करने के बाद दोबारा स्पीड मेजर करना और एक डायरी में नोट करना एंड ट्रैक इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 week, 2 week, 3 week, 4 week. When you stop seeing improvement, then come back to me. I'll help you out. But I think you should see improvement till the level we need. 150 words per minute मैं आपको लेकर के जाऊंगा, अगर आप आज शुरू करते हो, दैट इज अ गारंटी, आराम से होगा, ठीक है? करो। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव करना है। अब मैं एक चीज मजेदार बताता हूं। 12th क्लास तक आई वॉज अ कंप्लीटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है? उसके बाद से मैं इंग्लिश में शिफ्ट हुआ एंड टुडे आई कैन से, एंड इवन लाइक when I had just cleared my 12th class, perhaps after 1 or 2 years, I could say I am one of the uh, most well-read persons in any room in for my age group. I am not saying कि 80 years के आदमी को मेरे सामने बिठा दो, but मेरी एज ग्रुप में किसी भी पीयर ग्रुप में मेरे को रख दो, आई एम वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पर्सन्स। बहुत सारा मैंने पढ़ा। कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करने के लिए आपको उतना नहीं करना है, दैट इज अ गुड थिंग। मतलब जो मैंने कर लिया, जो उससे लेसन्स लिए, वो आपको सीखने हैं, ठीक है? तो वो लेसन्स क्या है? पहली चीज, यू हैव टू डू एक्टिव रीडिंग। व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? अब देखो, जब पढ़ते हो ना, पैसिवली पढ़ने का मतलब है हाथ में किताबें पढ़ रहे हो, पता नहीं नींद आ रही है नहीं आ रही है, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? एक्टिव रीडिंग का मतलब यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, एंड व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? ओके, आई विल राइट सम ऑफ दोस क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज हैपनिंग, why is it happening, who exactly is the person involved, where is it happening, when is it happening, right? And let us say how is it happening. So these are the basic questions. I'm pretty sure you have done that in your 9th, 10th, 11th, 12th English or somewhere, uh, but these are the questions if you ask while reading anything, that is what I'll say, you are doing active reading. अब active reading का फायदा क्या है? First thing is you comprehend immediately what is happening and this will happen over a period of time. अगर अभी तक नहीं किया है, अब करना शुरू करोगे 2, 3, 4 महीने में, you will have a practice of this, ठीक है? तुरंत नहीं होगा, right? Secondly, as soon as you get answers, underline those points. Those are the key points यार। इसी से तो पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? The question would be something related to that. What is the argument? What is happening? Why is it happening? Who is doing that? Etc. etc. तो इनके जो आंसर्स है ना, जस्ट अंडरलाइन। क्यों? टाइम बचेगा, क्वेश्चन पे आओगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा पैसेज। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देन दे रीड द पैसेज, देन दे राइट द आंसर। नहीं नहीं नहीं, टाइम बचाना है यार। इट इज ऑल अबाउट टाइम, इट इज ऑल अबाउट स्पीड। यू हैव टू इंप्रूव योर स्पीड व्हाइल रिटेनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, इट्स अ स्किल यू नीड टू रीड। परहैप्स आई विल टेक क्लासेस फॉर दैट आल्सो। मतलब यूट्यूब पे तो पता नहीं, बट क्लास में तो मैं करवाता ही हूँ, ठीक है? प्रैक्टिसिंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट हो या प्रैक्टिस पैसेजेस हो, डेली प्रैक्टिस पैसेजेस ग्रुप में आओ, फ्री में मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, नीचे लिंक दे रखा है। नहीं तो मॉक टेस्ट, कई सारे लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, डेफिनेटली, बट मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज भी करना होता है। प्रैक्टिस वाला जो पैसेज है करने के बाद उसको एनालाइज भी करना होता है, उससे जी नहीं चुराना है, वो जरूर करना है। अगर करोगे, मेरी गारंटी है, योर कॉम्प्रिहेंशन विल इंप्रूव ड्रास्टिकली विद इन say 2 months. It will take some time, 1 month, 2 months, 3 months, but it will improve. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर मैंने पहले ही बोला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देयर इज अ ट्रेडिशनली वेरी गुड बुक कॉल्ड रेन एंड मार्टिन, चल रही है पुरखों के जमाने से। मेरे फादर ने भी शायद पढ़ी होगी, अगर उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है तो, ठीक है? आपके फादर ने भी पढ़ी होगी, और
जब मैंने 12th कर लिया तो मैंने भी पढ़ी कि भाई कुछ है रेन एंड मार्टिन, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें प्रैक्टिस होते हैं, आप प्रैक्टिस लगा सकते हो, परहैप्स इट विल हेल्प यू मोस्टली बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर व्हाट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इट वोंट बी रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि ग्रामर आपकी रग रग में बसा हुआ होगा, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश प्रीटी डिसेंटली, दैट इज एटलीस्ट व्हाट आई एम अज्यूमिंग, राइट? तो नहीं है तो कर लेना, है तो कोई बात नहीं, बट व्हाट इज मैंडेटरी इज दिस, 2 3 4 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, नॉट ओनली फॉर क्लैट, केवल क्लैट के लिए नहीं, फ्यूचर में भी बहुत सारे एग्जाम लिखोगे, इन जनरल इन योर लाइफ इट विल बी वेरी हेल्पफुल बुक, बहुत अच्छी किताब है। अब मैं इतना अच्छा रिव्यू दे रहा हूँ तो कोई कारण होगा उसके पीछे, मेरे कहने पे hundreds of people have read this book, it has helped them clear their exams, not only CLAT but other exams also, okay? तो मेरे कहने से एक बार इसको परचेज कर लेना, it's hardly 200 rupees I think, not even that perhaps, रेड कलर की किताब आती है, अंदर एक्सरसाइज दी है, पेंसिल लेके बैठना, डेली एक एक्सरसाइज करना, यू विल सी इंप्रूवमेंट, यू विल से थैंक यू टू मी, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना नीचे दे रखा है, मुझे आप मैसेज करोगे थैंक यू सर आपने ये बुक बता दी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है? दिस इज अ वेरी गुड बुक, आई सजेस्ट यू डू इट, और अगर आपने इतना कर लिया, साथ में आपकी रेगुलर रीडिंग हैबिट्स हैं, I don't see how you will fail to do any of the these questions which ask vocabulary, करना ही करना है, होना ही होना है, टेंशन ही नहीं है उसकी, ठीक है? नेक्स्ट, अब होता क्या है, एग्जाम में हम बैठे होते हैं, हमारे पास में सारी नॉलेज है, सब कुछ है, समटाइम्स इट इज नॉट जस्ट आवर डे, इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। मैं एग्जाम में बैठा था इस बार, आई विल नॉट से इट वाज नॉट माय डे, डेफिनेटली इट वाज माय डे, बट आई कुड हैव डन बेटर, हाइंडसाइट इज ऑलवेज परफेक्ट, तो आई से परहैप्स 2 3 4 मार्क्स ज्यादा आ सकते थे, नहीं है कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट योर डे, सो व्हाट डू, यू प्रायोरिटाइज, यू आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन डू, यू आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन नॉट डू, एन एग्जाम्पल, 10 मिनट बचे हैं, 4 पैसेज है, क्या करोगे, ठीक है? तो यू हैव टू डू 2 थिंग्स, क्वेश्चन देखना पहले, और उसमें देखना कि कौन से क्वेश्चंस में कंक्लूजन पूछे हो या मेन पॉइंट पूछा हुआ है। जनरली कंक्लूजन्स और मेन पॉइंट यू विल फाइंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, perhaps in the first line, or last paragraph. In 70% of the cases this will be true, 70% is a big number, right? तो लास्ट लाइन या पहली लाइन में कंक्लूजन मिलेगा, या लास्ट या पहले पैराग्राफ में कंक्लूजन मिलेगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उतना पढ़ो, कंक्लूजन मिल रहा है तो चलो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है, कुछ और करेंगे, this is one thing. Secondly, what you do is prioritize questions, for example you should do vocab and vocabulary type questions, ये तो मैंने बता ही दिया कि कंक्लूजन वाले करने हैं, vocabulary टाइप, कोई टाइम नहीं लगना, कोई पैसेज नहीं देखना, देखा आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो ये चीट कोड्स हैं एग्जाम में आपको करने के लिए, ऐसे कई सारे चीट कोड्स मैं आने वाले वीडियोस में भी आपके सामने लेकर के आऊंगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और आने वाले दिनों में एज यू प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स, आपका जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो और बेटर होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, आई विल कम अप विद सच वीडियोस, आई एम श्योर दीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।